Done. Somebody start. Yes, we are live. Okay. Uh, Good evening, everyone. I welcome the team from Continual Engine and also the various viewers who have joined us on YouTube. I welcome you on. I am Turab Chimthanawala, and I welcome you on behalf of Blind Graduates Forum of India for this knowledge sharing session. So friends, with the advent of technology, like technology has been a very big boon for the visually challenged in accessing various content, be it our class textbooks or our work related stuff, or even some other reading that we normally do, fiction or non-fiction. Technology has helped us a lot, be it JAWS or NVIDIA on our computers, or Android and iPhone. We have voiceover and talkback. So but there are certain things in which we get stuck up. For example, the STEM people, the engineering and science people, they have to deal with certain chemical formulae, graphs, etc. Then the people in the finance sector also have to grapple with complicated tables and flowcharts and graphs. And if it is not all this, then there is always the PDFs, which are like from our textbooks to our telephone bills. Everything is in the form of PDFs. So we often find various workarounds like some cited assistants or using OCR or some other tools. But as you all know that they are not effective. If they are effective, then they are very time consuming and costly. So today we have collaborated with Continual Engine, who have developed tools combining human intervention and artificial intelligence. So, Continual Engine is an organization which is committed to providing learning which is accessible, engaging, and enjoyable. They use automation, deep learning, machine learning, computer vision, and natural process language processing to develop their tools. So they will be sharing more about these things. Now I would request my colleague Tanya Balsara to take the session forward. Hi, everyone. Good evening. And thank you so much to all the team members of Continual Engine for being here with us. My name is, like Turab said, my name is Tanya Balsara, associated with BGFI. So let me tell you something about BGFI. The Blind Graduates Forum of India was established in the year 1985. And we work in the field of accessibility and advocacy for the visually impaired. We have been conducting various activities like knowledge sharing sessions, outdoor events, and in this lockdown, we have had a host of virtual sessions, today being one of them. We recently started our Delhi chapter, and the aim of BGFI in for the next year is to create more awareness of the visually impaired by bringing them in the mainstream. I'd now like to request the rest of the team, the BGFI team, to introduce themselves. Good evening, everybody. This is Sadaf Khan. I am a human resource professional and an industrial psychologist. Over to you, Ajay. Hi everyone, I'm Ajay Minocha and I am a credit risk professional. I work with an MNC bank and I have been associated with BGFI as an honorary secretary since almost like last more than 4 years now. Hi everyone, I'm Ratul Arora. I have been associated with BGFI from last 1.5 years. And as far as basically I'm a accessibility professional working with the MNC. Yeah. Okay, so I request Continual Engine to now. Over to you guys. Hi, thank you, BGFI. This is Mousumi Kapoor from Continual Engine. Thank you, BGFI, for the introduction and for giving us this opportunity to present our products and our solution to your forum.
And before we go deep into what Continual Engine is, what our product journey is, and the demo of the product, I would like to introduce myself and my team. So I'll start with myself. I am the founder and CEO of Continual Engine. I am a technologist. I'm an electrical engineer. I graduated from IIT Delhi and then went to US to do my master's. And I have been working with corporates, MNCs, and startups for the last couple of decades, working on developing products from ground up and scaling them at a global level. Continual Engine is my first entrepreneurial venture, and I would like to use technology to make an impact and to do good. So that's something that I aspire for, and hopefully, what Continual Engine's offerings are going in that direction. Having said that, now I'll hand it over to Deepika. Hi everyone, this is Deepika. I'm marketing lead for Continual Engine. Further to this session, you can always reach out to me if there's any queries. Siddharth. Hi everyone, this is Siddharth. I work at Continual Engine. I'm the product owner for PrEP, which is a PDF remediation suite. I'll be showcasing the PDF remediation demo today. Thanks. Laukik. Hi everyone, this is Laukik. I'm the product owner for my Athena product, a learning experience platform, and I'll take us through the presentation. Thank you. And we also have two very special people with us, Dr. Kumar and Dr. Shriram, and I would like them to introduce themselves as well. Hi, I'm Kumar here, this side. Basically an academician, a chemistry and chemical engineer with 20 years of academic and research experience. And for the past 2 years, I'm with Continual Engine as an accessibility and content and product development advisor for their all text and PDF accessibility. That's me. Hello friends, this is Sriram and I'm also visually challenged like Dr. Kumar. And I joined this team because this is a very exciting team for me in terms of making science, technology, engineering, maths, and accounting accessible for the blind. I've been with this team for the last 1.5 years. Thank you. Thank you all. So with that, what I will do is take you through a brief presentation which captured the journey of Continual Engine and also give you a brief overview of its products and solutions. And then we'll go into a detailed demo of each one of these products. So who are we? We are a technology startup and we are building products for the global market. We are leveraging AI and platform-driven workflow automation to make accessibility and document processing simpler, faster, and cheaper. So basically, when Continual Engine was established, the mission and vision of Continual Engine was to use technology to make to automate learning processes. And while we were dabbling with with a few use cases, we stumbled upon accessibility. And what we found was that there was a burning need in the area of STEM accessibility for some technical solutions which would make STEM images and document accessibility easier and faster and cheaper. So we found that there was a lot of STEM content lying there and people wanting to make it accessible, but but they were not able to do it because A, it's time consuming, and B, it was very expensive. So and STEM being very structured is again an ideal area for use of technology, and specifically the cutting edge technologies that's right now out there, which is AI, machine learning, computer vision.
So we started off by trying to use technology to make STEM images accessible. And then what we found was that these images lie in PDFs, Words, PowerPoints. So again, the tools for STEM documents and even regular documents to make these document accessible itself is not that efficient. So therein we developed another solution to make documents accessibility faster, cheaper, um, and more easier. So currently, Continual Engine is headquartered out of US, but our engineering and product team sits in Bangalore. We are around a team of 30. And we received around $2 million in seed funding. And our advisory board comprises of global CEOs and CXOs. So one other product that we have been working on, which is alongside accessibility, is a learning platform. And today, again, you will be seeing a demo of the learning platform. And as I go through the presentation, I will give you more details on the learning platform that we have developed. So our Continual Engine, we have a suite of accessibility products and learning products. In accessibility products, we have image accessibility and document accessibility product. So our image accessibility product is what we called our vision range of products. So we have something called ChemVision, which makes complex organic chemistry, inorganic chemistry images accessible. We have something called Math Vision, which tries to do the same thing for math images. And then we have Table Vision, which takes complex accounting tables and also complex non-accounting tables and makes them accessible in the form of alt text or accessible HTML. And then PrEP, which is the PDF remediation platform, which is our document accessibility product. And then we have something we call My Athena, which is our personalized learning platform. Now, let me go into more detail about our ChemVision product. So our ChemVision product is a product which has been trained on millions of chemistry images, organic chemistry images, complex organic chemistry images. And what it does is the model is an AI model which breaks down complex organic chemistry structures and images and extracts features out of these images. And then we use templates and natural language processing to stitch together a alt text description of these complex structures. So when we go through the demo of ChemVision, then you can see the kind of complexity that the model can currently handle. And one of the reasons why we focused on chemistry was when we started on our journey journey has always been in tandem or in collaboration with top universities and top publishers. So when we started developing this alt-text solution, we asked them, hey, what is your biggest pain point? And they said organic chemistry structures are really, really difficult for them to make accessible. And that's how we started off. Our alt-text journey started off with the most complex structure out there, because we thought that if we can crack a complex problem, then the others are easier to handle. And that's how it worked out, because when we started working on chemistry models, then we figured out a lot of different other techniques, like, how do you detect curved arrows, how do you detect straight arrows, and and then we use these modules to make other disciplines images accessible. Our next product that I want to give you an overview of is our Math Vision product.
Our Math Vision product does the same thing for math images like math graphs, math equations, as our Chemistry Vision product does for chemistry images, which is it generates automatic alt text. So if you have a math graph which has a parabola, line, ellipse, circle, so the algorithm is able to detect firstly where the axis is, then it is able to detect the markings on the axis, then it is able to figure out what kind of a curve is there in that image, and then it maps the salient point of that curve to the markings, and it is able to generate a intelligent description. Again, I'll be showing the more of this in our demo. Table Vision, as I mentioned before, is our alt text tool which can handle complex tables like ledgers, balance sheets, journals, T-cells, and is able to generate descriptions like long descriptions, which would otherwise take a human person to take hours for a human person to write, can now be generated in seconds. And also we give the additional capability of converting these table images to either HTML format or into a Excel format, which can then be reusable. Now we move on to our next product, which is PREP. So we call our product PREP, PREP being an acronym for PDF Remediation Platform. What PREP does, when we looked at the PDF remediation solutions that we saw out there in the market, what we found was like Adobe was extremely cumbersome to use, and it would fail miserably in remediating certain kinds of documents. And its UI was really very difficult to use, and there was a very steep learning curve. And that's why we said that let's come up with a solution which makes the entire process easy so that anybody, we also found in universities that it's the students who do a lot of remediation, who really have no prior knowledge of how to remediate documents. So the goal was to create a tool that a novice can start using and very rapidly gain a competence and start remediating complex documents. So again, here we leverage use of technology and AI to come up with a guess of what the tags should look like. And we have a highly intuitive UI, which enables users to make changes wherever the AI fails. We can now handle complex STEM documents, we can handle scanned documents, we can handle forms. And Siddharth will be showing you a demo of PREP shortly. That we come to our other platform, our personalized learning platform, which we call My Athena. Athena is temple of learning. So My Athena is like my own personalized temple of learning. So this is basically a learning experience platform. So what we found was that a lot of corporates, they spend large amounts of money in signing up with big LMS providers, but it doesn't really lead to increase in employee engagement as much, and courses don't really get completed, and the corporates get tied up to a particular course provider. So our objective here was to eliminate that dependence of corporates on a single course provider and become an aggregator, so that the employees in the organization can access not just courses from one course provider, but from multiple course providers.
And not only courses, they can access articles, they can access videos, podcasts. So whatever that they want to search for, all that material, knowledge is comes under one platform. And then we have built workflows around it to facilitate the taking of the course. And we have AI enabled personalized learning path for employees. And we have quick and easy integration with different, with all HR systems and other systems which already exist in the corporate. And because we don't have very expensive upfront course license fees, our platform is very ideally suited for small and medium businesses. In fact, I just want to share a piece of good news with all of you here. My Athena won award in the prestigious Brandon Hall group of Technology Excellence Awards, which is given to top technology firms in the ed tech space, education technology space. And we got it in the field of advanced learning techniques, a learning management system in small and medium businesses. So, Lockett would be giving you a demo of My Athena shortly. Before Lockett takes over, I just wanted to tell all the viewers कि आपको अगर कोई भी questions होगा तो आप अपने comment section में वो questions पूछ सकते हैं. Your questions will be taken up by the by Continual Engine team towards the end of the session. Yeah, please go ahead. Okay. The other thing that I wanted to stress about our accessibility service is that we are using technology to streamline and to make the process efficient. But we do recognize that ultimately technology is only so much capable, right? And so we always have a human in the loop who will look at the output of each and every image, alt text, or a PDF remediation document and do a thorough review to make sure that all the guidelines are being followed and the images and the documents are fully compliant. So the way you can engage with Continual Engine is either through licensing our products or through services. So if you have any questions, then please contact us at contact@continualengine.com. So this basically marks the end of my overview of the Continual Engine products and our journey so far. Interesting product, man. Okay, yeah, Sadaf, I just saw your message and which said that you want us to use Hindi. I just saw it, so I apologize. I spoke mostly in English. No problem. थोड़ा सा multilingual because our viewers are also comfortable with Hindi. So थोड़ा सा Hindi wherever possible. बिल्कुल ठीक. Yeah. Thank you so much. So yeah. So with that, what we can do is maybe मैं सिद्धार्थ को बोलती हूँ. Siddharth, you show a presentation of prep, and then I will show the all text presentation after that. Sure. Sure. Yeah. I'll just share my screen now. सिद्धार्थ, if possible, हिंदी में थोड़ा बात कर लेना. Yeah. Okay. Yeah. So so I'll talk about PDF remediation platform prep. So इसको हम use करते हैं PDF remediation करने में. So all the PDF जो भी files होती है सारी, तो
बाय डिफॉल्ट एक्सेसिबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर टेबल्स, लिस्ट, इमेजेस है तो उन सब के लिए ऑल टेक्स्ट एंड वो सारी डिटेल्स चाहिए होती है। तो उसको हम ऐसी जो भी पीडीएफ है जो एक्सेसिबल नहीं है उसको हम प्रेप में अपलोड कर सकते हैं एंड उसको रेमिडिएट कर सकते हैं। तो मैं आज वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे रेमिडिएट करते हैं एंड उसको अगर टाइम मिला तो उसको हम एक बार जॉज या एनवीडीए से पढ़ के भी आई विल बी एबल टू एक बार दिखा सकता हूँ। तो स्टार्ट करेंगे हम डेमो। सो दिस इज द प्रेप प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर सबसे पहले दिखता है हमें कि कितनी फाइल अपलोड की गई है, फिर कौन कौन सी फाइल कंप्लीट हो गई एंड बाकी लिस्ट दिखती है जो भी फाइल अपलोड जिसने भी करी है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। मैं पीडीएफ फाइल अपलोड करूंगा। तो इस पीडीएफ फाइल के अंदर कुछ लिस्ट है, कुछ टेबल है, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको मैं रेमिडिएट करूंगा प्रेप में अपलोड करके। सबसे पहले जब मैं पीडीएफ अपलोड करता हूँ तो प्रेप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि इसमें कौन से टैग्स है एंड उनका रीडिंग ऑर्डर क्या है। उसके बाद से जो पीडीएफ को रेमिडिएट कर रहा होगा उससे चेक करना है कि जो टैग डिटेक्ट हुआ है वो सही है या फिर कुछ चेंजेस करना है। तो अगर जैसे यहाँ पे ये हम डेमो के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट लिया जिसके अंदर कुछ लिस्ट है, कुछ हेडिंग्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सेंसिटिविटी यूज करेंगे। तो इस फीचर से क्या होता है कि जो हेडिंग्स है और जो पैराग्राफ्स है कंटेंट वो सेपरेट आउट हो सकते हैं और उसके बाद मैं जो भी कंटेंट का अप्रोप्रिएट टैग टाइप है उसको चेंज कर सकता हूँ। सबसे पहले मैंने कंटेंट का सेंसिटिविटी यूज करके सेग्रीगेशन कर दिया है। तो अभी हर कंटेंट अलग अलग हो गया। अभी जाके मैं इनका टैग टाइप चेंज कर सकता हूँ। तो अगर कुछ हेडिंग्स है जो नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है उनको मैं मैनुअली जाके चेंज कर सकता हूँ हेडिंग 1, हेडिंग 2 में। जैसे कि ये फर्स्ट पेज मैंने हेडिंग्स कर दिया है, पैराग्राफ कर दिया है। तो एक और जो मेन एक्सेसिबिलिटी इशू रहता है सबसे ज्यादा वो रहता है लिस्ट के लिए, बिकॉज लिस्ट नेविगेशन में प्रॉब्लम रहता है अगर वो प्रॉपरली टैग नहीं है। तो प्रेप के अंदर जनरली कोई भी और जैसे अडोबी होगा जिससे भी हम टैग करते हैं उसमें बहुत टाइम लगता है लिस्ट को टैग करने में। पर प्रेप में हमने स्पेशली टेबल्स और लिस्ट के लिए 1 क्लिक प्रोसेस लेके आया जिसमें खाली एक क्लिक में वो पूरा लिस्ट टैग क्रिएट हो जाता है। जैसे कि ये नंबर्ड लिस्ट था उसका मैंने लिस्ट टैग क्रिएट किया। आफ्टर द डेमो मैं इसको एक बार रीड करके बताऊंगा जॉर्ज से कि एक्सेसिबिलिटी कैसा रहता है इनका। तो ये जैसे कि आप देख सकते इसमें मैंने लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट टैग किया। अभी मैं सेकेंड पेज पे जाऊंगा। यहाँ पर भी लिस्ट है पर इस लिस्ट के अंदर ये एक नेस्टेड लिस्ट है जिसका मतलब एक लिस्ट के अंदर लिस्ट है। इसको हम टैग करेंगे तो इसका भी सेम प्रोसेस रहता है। हम एक क्लिक के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स इसको भी टैग कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट मैंने अभी टैग किया एक क्लिक में, इसको अगर मैं अडोबी में टैग करना चाहूँ तो मुझे हो सकता है आधा घंटा भी लगता है। तो ये सब प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाते हैं प्रेप के अंदर। जो भी पीडीएफ रेमिडिएशन के लिए प्रेप यूज करता है उसके लिए एक ये कॉम्प्लेक्स टेबल को मैं अभी टेबल डिटेक्शन यूज करके टैग करूंगा। तो यहाँ पे डिटेक्ट टेबल करके बटन आता है जिसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि टेबल का हेडर कौन सा है, रो क्या है एंड ऑल द स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए उसके लिए जिससे वो एक्सेसिबल बन जाए। एंड ये एक क्लिक में एक्सेसिबल हो गया। सेम एक और सिंपल टेबल है, इसके लिए भी सेम प्रोसेस में फॉलो करूंगा एंड मैं डिटेक्ट टेबल करूंगा तो ये टेबल डिटेक्ट हो जाएगा एंड अपने आप इसका टैग क्रिएट हो जाएगा जो भी टेबल के लिए चाहिए। एंड लास्ट के अंदर आते हैं तो ये फॉर्मूला है जो एक पैराग्राफ के अंदर है, इसको हम टैग करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, जहां पे भी फॉर्मूला है वहां पे मुझे एक बॉक्स बनाना होता है ऐसे एंड उसके बाद मुझे इसका ऑल टेक्स्ट जनरेट करना होता है। तो मैनुअल प्रोसेस में यह रहता है कि किसी को इसका ऑल टेक्स्ट मैनुअली टाइप करना पड़ेगा या खुद से लिखना पड़ेगा। पर प्रेप के अंदर हमारे पास ऑटोमेटिक ऑल टेक्स्ट जनरेशन है स्पेशली मैथमेटिकल फॉर्मूलाज के लिए जिसको हम यूज करके 1 क्लिक में इसका ऑल टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। इसे मैं सेव करूंगा एंड मेरा पीडीएफ रेडी हो गया है एक बार डाउनलोड करने के लिए। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करूंगा। तो जैसे ही पीडीएफ टैग हो जाता है तो उसको हम जॉज या एनवीडीए से रीड कर सकते हैं। तो मैं इस डॉक्यूमेंट को एक बार रीड करके बताऊंगा ताकि
अब देखते हैं कैसे इसका बेनिफिट रहता है इसको टैग करके। तो मैं NVIDIA यूज करूंगा ताकि आप लोग समझ पाए इसका। या PDF तो title अभी Adobe आप लोग सुन Acrobat पा रहे Pro होंगे स्क्रीन DC. रीडर का ऑडियो। PDF title Adobe तो अभी मैं Acrobat बीच Pro में बोलूंगा DC. नहीं, मैं जस्ट Document नेविगेट करूंगा बटन बाय बटन, 1/2C. पैराग्राफ बाय Users पैराग्राफ, एंड आप SID सुन पाएंगे downloads कि prep कैसे AHG टैग demo हुआ ये V3 डॉक्यूमेंट। tagged एक लिस्ट, 2. एक टेबल को .pdf सैंपल तौर पे 2 रीड करके pages. Heading level 1 page. List of Canadian province. List with 10 items 1. Oh. List with 3 items page 2 bullets review or check for error or fit black square अभी मैं preview टेबल the पे जाऊंगा। document table with 5 rows column 2 through 4 first column 5 through 7 second quarter 2015 column 8 through 10 third quarter 2015 column 11 annual to row 2 to row 3 Sep Aug July June May column 6 to table with 4 तो rows ऐसे and करके 4 to exit बेसिकली show पीडीएफ को speed रेमिडिएट कर सकते हैं कोई भी, एंड उसको ऐसे एक्सेसिबल बना सकते हैं ताकि स्क्रीन रीडर के लिए वो बेटर एक्सपीरियंस रहे एज कम्पेयर टू अगर उसको रेमिडिएट नहीं करते। तो या एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? We'll take the questions, हम लोग बाद में लेंगे सिद्धार्थ। ओके। हाँ, तो सिद्धार्थ फिर मैं दिखाती हूँ अभी ऑल टेक्स्ट वाला प्रेजेंटेशन, फिर उसके बाद हम लोग लौकिक हम लोग तो माई अथीना का प्रेजेंटेशन दिखाएगा। श्योर। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी तो मैं आप लोगों को हमारा ऑलटेक्स प्रोडक्ट दिखाऊंगी। तो ये हमारा डेमो यूआरएल है। डेमो यूआरएल में हम लोगों ने बेसिकली ये जो वेबसाइट है इसमें मैं इमेजेस अपलोड कर सकती हूँ, और फिर जब मैं बटन क्लिक करूंगी तो उस तो Korean story thing for you. What happened? So can I request everyone to please go on mute? हेलो, सॉरी फॉर दैट, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये जो वेबसाइट है तो इसमें सारे जो डिसिप्लिन्स हैं जिनका हम लोग ऑलटेक्स क्रिएट कर सकते हैं उन सबका एक आइकन है। तो मैथ के लिए एक आइकन है, केमिस्ट्री के लिए है, टेबल के लिए है, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस के लिए है, क्योंकि हम लोगों ने अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए अलग अलग मॉडल्स बनाए हुए हैं। तो जिस भी डिसिप्लिन का हमको ऑलटेक्स्ट चूज करना है, ऑलटेक्स्ट जनरेट करना है, हम उस डिसिप्लिन का आइकन को क्लिक करेंगे। तो मैं मैथ का आइकॉन मैथ का मैं डेमो दिखाना चाहती हूँ, तो मैं मैथ को क्लिक करूंगी। उसके बाद अभी जो स्क्रीन आया है उस स्क्रीन में ऑप्शन है कि मैं इमेजेस को अपलोड कर सकती हूँ। तो मैं एक इमेज को अपलोड कर सकती हूँ या मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर सकती हूँ। तो मैं अभी जाऊंगी और मैं कुछ मैथ के इमेजेस मैंने पहले से चूज किए हुए हैं, तो मैं उसको अब वेबसाइट पे अपलोड करूंगी। तो फिर दूसरा स्क्रीन आता है, उसमें मैं सारे इमेजेस को देख सकती हूँ और मेरे पास ऑप्शन है कि मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जनरेट करना चाहती हूँ या लॉन्ग डिस्क्रिप्शन या दोनों। तो इस डेमो के लिए हम दोनों शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे। तो बेसिकली ये मैथ में 4 इमेजेस हैं, अलग अलग तरीके के इमेजेस हैं। एक बार ग्राफ है, एक में पैराबोला है, एक में लाइन है, एक में पैराबोला और लाइन दोनों हैं। तो मेरे पास एक यहाँ पे बटन है, इसको जनरेट लिखा हुआ है उस पर। तो मैं जब ये जनरेट क्लिक करूंगी
तो ये बैकएंड में हमारे जाएगा और वो मैथ वाले मॉडल को ये इन्वोक करेगा और वहाँ पे वो फिगर आउट करेगा कि किस तरह का इमेज है, किस तरह का मैथ इमेज है, ये बार ग्राफ है कि पैराबोला है कि स्ट्रेट लाइन है। एंड जब ये क्लासिफायर जो आउटपुट देगा उसके बेसिस पे वो फिर से उसके स्पेसिफिक, उस कैटेगरी के स्पेसिफिक वाले मॉडल पे जाएगा और फिर उसके स्पेसिफिक टू दैट कैटेगरी जो फीचर्स है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर उसको ऑल टेक्स्ट में कन्वर्ट करके फिर आउटपुट देगा। तो जो फर्स्ट वाला जो हमारा इमेज है वो एक बार ग्राफ है, तो उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, दिस इज अ बार ग्राफ। अब मैं लॉन्ग डिस्क्रिप्शन को आपको पढ़ा के सुनाती हूँ। तो व्हाट आई एम यूजिंग इज रीड अलाउड फ्रॉम मेरा मैक ऑप्शन, मैक लैपटॉप है, तो मैक लैपटॉप में मेरा एक रीड अलाउड ऑप्शन है, तो वो मैं यूज कर रही हूँ। सो सुनिए इसको। A vertical bar graph is drawn on a coordinate plane. The horizontal axis is labeled time period. There are 8 markings on the horizontal axis. They are 6A, 9A, 9A, 12P, 12P, 6P, 6P, 9P, 9P, 12A, 12A, 3A, and 3A, 6A. The vertical axis is labeled percent of robberies. There are 5 markings on the vertical axis. They are 5, 10, 15, 20, and 25. There are 7 bars in the graph. For marking 6A, 9A, percent of robberies is 4. For marking 9A, 12P, percent of robberies is 6. For marking 12P, percent of robberies is 23.61. For marking 6P, 9P, percent of robberies is 18. For marking 9P, 12A, percent of robberies is 18. For marking 12A, 3A, percent of robberies is 17. For marking 3A, 6A, percent of robberies is 13. तो बेसिकली मॉडल ने क्या किया, मॉडल ने पहले फिगर आउट किया कि एक्स एक्सिस का लेबल क्या है, वाई एक्सिस का लेबल क्या है, उसमें मार्किंग्स क्या हैं, फिर इसने फिगर आउट किया कहाँ बार्स कहाँ पे है, उनका हाइट क्या है, और उनका हाइट को उसने मैप किया टू द मार्किंग्स एंड देन ये ऑल टेक्स्ट जनरेट हो गया। अब ये ऑल टेक्स्ट जो है अभी लाइक टेक्सचुअल फॉर्मेट में जनरेट हुआ है, पर अगर आप किसी को जरूरत है तो हम उसको टैबुलर फॉर्मेट में भी जनरेट कर सकते हैं, तो वो ज्यादा आसान होगा समझने में। तो हम एक और जल्दी से दिखाते हैं आपको, एक लाइन ग्राफ का दिखाते हैं। एक इमेज है, उसमें एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और एक लाइन है। A line is graphed on the xy coordinate plane. The x-axis ranges from -2 to 12 with the increment of 1 unit. The y-axis ranges from -2 to 12 with the increment of 1 unit. The line enters the viewing window in the first quadrant, goes up and to the right, and exits the viewing window in the first quadrant. The line starts at 1, 2, and ends at 7, 10. The line has a slope of 1.4. Equation of this line is y equals 1.4x plus 1. मैंने कुछ और कैटेगरीज के डिस्क्रिप्शंस पहले से ही जनरेट करके रखा हुआ है। तो जैसे फिजिक्स का कैटेगरी लेते हैं, उसमें एक एनर्जी लेवल डायग्राम है, एनर्जी वर्सेस एक्स डायग्राम है, वो भी एक ग्राफ है, पर ये मोर फिजिक्स ग्राफ है देन मैथ ग्राफ। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ा के सुनाती हूँ। The graph is drawn on a coordinate plane. The horizontal axis is labeled x, the vertical axis is labeled energy. The curve starts on the vertical axis from a point close to the upper end of the axis and decreases as x increases. The curve forms a dip and increases as x increases. The curve rises to a peak and decreases as x increases. The curve forms another but smaller dip as x increases. The curve then increases as x increases. फिर हम आपको एक सर्किट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा के सुनाते हैं, सिंपल सर्किट। The circuit contains a total of 5 elements. The elements present in the circuit are 1 inductor which is labeled as L, 1 resistor which is labeled as R, 1 capacitor which is labeled as C,
two sources which are labeled as V subscript 1, T, V subscript 2, T. One end of the component V subscript 1, T, is connected to L. The other end of the component L is connected to R, and C. The other end of the component R is connected to V subscript 1, T, and V subscript 2, T. The other end of the component V subscript 2, T, is connected to C. तो हम लोग और भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हैंडल कर सकते हैं, पर क्योंकि डेमो में टाइम कम होता है इसलिए हम सिंपल सर्किट्स दिखा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल्स दिखा रहे हैं। अभी एक अकाउंटिंग का भी दिखाते हैं आपको। अकाउंटिंग का हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी हैंडल कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम एक सिंपल वाला लेते हैं, एक लेजर लेते हैं जिसमें बस 3 रोज हैं और 6 कॉलम है। तो इसका मैं पढ़ा के आपको सुनाती हूँ। Statement 1. This statement shows account, repair expense, on the left-hand side of the statement, account number 537. On the right-hand side of the statement consists of 6 columns and 3 rows. The headings of the columns, from left to right, are as follows: date, item, POST ref, debit, credit, balance. The date column is subdivided into 2 columns. The balance column is subdivided into 2 columns, namely debit and credit. The entries are as follows: row 1, date, first column, 20, September, second column, 10, POST ref, J5, debit, 50.00, balance debit column, 50.00, row 2, date, second column, 15, POST ref, J5, debit, 400.00, balance debit column, 450.00, row 3, date, second column, 25, item, correcting, POST ref, 16, credit, 400.00, balance debit column, 50.00. ठीक है, अभी हम आपको कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इमेजेस दिखाते हैं और उसके ऑल टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन सुनाते हैं। तो ये एक लाइन स्ट्रक्चर है। आप देखिए कि हमारे मॉडल ने कैसा इसको डिस्क्राइब किया। The figure illustrates a formula with the following structure: a carbon chain of 5 carbon atoms represented in the form of a line structure by 4 zigzag lines. CH3, single bond, C, single bond, CH2, single bond, CH2, single bond, CH3. The second carbon is double bonded to O. हम एक और आपको सुनाते हैं। तो ये एक रिएक्शन है और पहले वाला लाइन स्ट्रक्चर था, ये एक ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है। तो इसका सुनिए आप। The figure illustrates a chemical reaction containing 2 reactants and 1 product. The first reactant is a carbon chain with the following structure: H3C, single bond, C, single bond, CH, double bond, CH2. The second carbon atom is single bonded to 2 CH3 groups. The second reactant is HCl. The product is a carbon chain with the following structure: H3C, single bond, C, single bond, CH, single bond, CH3. The second carbon atom is single bonded to 2 CH3 groups. The third carbon atom is single bonded to Cl. और एक और मैं आपको सुनवाती हूँ जो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का है, हाइड्रोकार्बन का इमेज है। इसमें एक नहीं, इसमें 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इसमें कुछ एरोज भी हैं। तो सुनिए इसका क्या डिस्क्रिप्शन है। The figure illustrates chemical reaction chain containing 2 formations. The first compound is as follows: a 6-carbon ring in a vertical orientation. A double bond is present between C2 and C3, C6 and C1. C1 is single bonded to CH3,
C4 is single bonded to NO2. There is a curved arrow from double bond between C6 and C1 to single bond between C4 and C5. The second compound is as follows: a 6-carbon ring in a vertical orientation. A double bond is present between C2 and C3, C5 and C6. C1 is single bonded to CH3. C4 is single bonded to NO2. There is a curved arrow from double bond between C2 and C3 to single bond between C1 and C2. The third compound is as follows: a 6-carbon ring in a vertical orientation. A double bond is present between C1 and C2, C5 and C6. C1 is single bonded to CH3. C4 is single bonded to NO2. तो हम और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के इमेजेस जिसमें कोड्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स होते हैं, ब्लॉक डायग्राम्स, नोड डायग्राम्स। तो अभी टाइम ना होने के वजह से सारे हम नहीं डेमो कर सकते हैं, पर अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन हो तो डेमो के बाद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, या किसी को अगर कुछ और if you have any other individual question, you can always contact us at contact@continualengine.com. So that's it from my side regarding our all text platform, and I'll hand it over to Laukik, जो हम लोगों को My Athena दिखाएंगे. Mousumi, apologies, Ajay this side. So I want to cover one quick, touch upon one quick doubt which many of our viewers might be having, so that a lot of questions are not repeated then. Firstly, how can the end user access it? Is it designed for individuals or institutions and companies? Oh, that's a very good question. So our plan is to actually release them as APIs or as UIs, where individuals can themselves upload images and get the description. So we have already released the table vision version of it. So it is www.tablevision.ai. And therein you can upload table images and get alt text, get HTML, get Excel, all these different versions. We are in the process of productizing all of these different categories. So like chemistry, engineering, physics, but they will come out in 1 or 2 months time frame. So we are working towards that. Until then, we have this on our local server, and we use it to process images for institutions, for universities, for publishers. Second question is, so you I watched Siddhartha's presentation as well as yours. It was mostly shown as, you're clicking through a particular element and then, he's generating the alt text and all. So my bottom line question is, can a person with blindness independently use these tools with the help of a keyboard, as we don't use mouse at all, and achieve the same quality of results as he or she intends to, or as the program should provide? Again, that's a very good question. So currently the prep platform is still, it has a lot of keyboard features, but not completely. And I will actually hand it to Siddharth, and Siddharth can address that point. Siddharth, you want to take that up? And then I'll take on the alt text piece after that. Yeah, much better. So currently all the major features like the one that I showed, like saving the state changes or using the list split, table split, and the entire platform in that sense has keyboard shortcuts for the key actions. But as the PDF remediation process itself is very visual in nature, so it might need, say, moving the tags around. You'll have to use the mouse and all that stuff. So it's not completely keyboard accessible, but the major functionalities are made accessible using keyboard shortcuts. Sure.
Okay, so because this is something where which is the biggest pain point. We may have a lot of inaccessible documents, but we may not have people those who can actually do it for us on a fly or whenever we need it. So I mean, that is something which is a great need for everyone. Last thing is, if you plan to touch upon this at the end of your presentation, that is perfectly fine. But what is the cost structure and anything, subscription model or anything to be like for the end user? So that is something which you can touch as a blanket statement at the end of the presentation also. But yeah, this is something which probably we would need you to address. Yeah, regarding the pricing structure, I think it would be best if we now handle that one-on-one with the concerned party. And because it depends on the need. Like as you know that like providing alt text for simple math equations is very different from providing alt text for complex chemistry images, right? So that's why our cost structure would be dependent on what the need is. Uh, and same for PDF remediation. Our for PDF remediation services and licensing fees, our prices are very competitive, and it is almost at par with what you would basically buy an Adobe license for. So if you are a non-commercial user, then our prep license would be almost similarly priced to a Adobe license. Does that give some insight to our pricing policies? Or More or less, yes, but yeah, I mean, because most of the viewers here won't know how much does an Adobe license cost, so that's why. So I mean, but it's okay. I mean, that's fine. yeah, so Mousumi, yeah, just the PDF one which I had asked, whether that a blind person can do it. Can I just answer it? My perspective also for that, if you have yes, permission. yes. Ajay, see, this Yes, is sir. basically the prep is basically what we want is, see, every university, now whenever the PDF remediation is required for students and other people, and in university materials are non-accessible, the PDF ebooks. So in every university now in India also we have this diversity cell and this production houses. So we can use those people to license it and then get it done so that we can be done on that. All with we have this Pusakalia, all these libraries. So basically the production houses for this. And this will work out to be much cheaper than getting a braille books and other things. Yeah, that I definitely agree with. I mean, Sir, but this PDF documents, we would like as individuals also we would need a similar thing like yeah, to because access. those of us who are corporate professionals, we may not have the services of a volunteer to do it for us in a day. We may need a document, say, in next hour or so to get it done. So I mean, because why I am asking this question is I'm a banking professional. I deal with like tens of annual reports. So you probably know where I'm coming from. So that's why, because that's a big pain point where there is a table which is not properly tagged and there are visual datas and stuff. So yeah. Ajay, what I would suggest is you can contact us, and we can try and give it to you in a very as for servicing, and we can give a very fast turnaround time for you. So that would be one option. We are also thinking of creating a portal when people can upload their documents, and then we can remediate it and give it to them. Or the other option is which might not immediately happen, but will probably happen say mid next year or so, is that we open it up to the consumer, and people can just use prep, and it will be charged based on the document that they process. So anybody can use prep, and we'll keep they need to have an account on the website, and based on the how many number of documents that they process, they'll get charged. Yeah, this is much clear. Thank you. I think we can proceed further. Sorry for the interruption, but I thought it's better to address some of the questions right now rather than keeping everything till the end. So yeah, I think we can proceed further.
Thanks. And Ajay, it would be great if you can try and use our Table Vision website. Deepika, you might want to share the URL with the group here on the chat window. Uh, and and you can give us feedback as to how you found that. So Table Vision is the table which converts table images to alt text and HTML and Excel file. So that is available for public consumption. Yes, so we will also be posting the link on the as a YouTube comment for our viewers, so that it is not exclusively here, but those of us who are listening and watching us, they can also try and give their feedbacks. So that probably will do, and thanks a lot. Thank you. And Deepika has shared the link, so you can share it with the YouTube audience as well. Yes, thanks. Okay, over to you, Lockett. Thank you, Mousumi. Thank you, everyone. So I'll just share my screen. Okay. So this is My Athena. My Athena में generally for organizations हम उनको help करते हैं to get all the external courses out there, such as courses on, say, technical courses or any communication courses, business courses on Coursera, Udemy, different platforms में जितने भी courses available है, हम उनको collate करके My Athena में एक साथ उनको रखते हैं, ताकि कोई भी employee एक organization में अगर उसको search करना हो कोई course, उसको बार-बार अलग-अलग website पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, rather than My Athena में आके वो simply वो course search कर सकते हैं. एंड सेकेंडली, नॉट जस्ट एक्सटर्नल कोर्सेज, अगर ऐसा कोई ट्रेनिंग है, ऐसा कोई कोर्स है जो उनको खुद उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाना है, उनको अपने एम्प्लॉयज, अपने टीम्स, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लोकेशंस के साथ उनको शेयर करना है, सो माय एथीना आल्सो प्रोवाइड्स इंटरनल कोर्सेज एबिलिटी, वेयर वी प्रोवाइड देम द एंटायर होस्टिंग प्लेटफॉर्म, जहां पे वो अपना खुद का कोर्स बना सकते हैं बाय मॉड्यूल, बाय लेसन्स, वीडियोस, रीडिंग मटेरियल्स, टेक अवेज, असाइनमेंट्स. एंड वहां पे वो कोर्सेस पब्लिश करके दे कैन गिव इट टू देयर एम्प्लॉयज. नाउ यहाँ पे एक स्क्रीन में मैंने जस्ट अभी शेयर किया, स्क्रीन में हमारे पास एक लॉगिन स्क्रीन है. बिकॉज दिस इज कॉर्पोरेट, सो लॉगिन स्क्रीन्स हम दो तरीके की प्रोवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स द सिंगल साइन ऑन लॉगिन, which means basically कि corporate users अपने corporate account से ही login कर सकते हैं, तो उनको कोई और username password create करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और else अगर उनको खुद के username password चाहिए तो वो भी हम provide कर सकते हैं, तो वो खुद का एक customized password भी बना सकते हैं. Now as soon as we log in, so अभी मैं log in करके जैसे ही I go to the first screen, तो first screen में हमें दिखता है कि माय एथीना में लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे मेन्यू बटन आइटम्स होते हैं जो हमें नेविगेट करने में हेल्प करते हैं. एंड द फर्स्ट लैंडिंग पेज इज द एनालिटिक्स. तो ये एनालिटिक्स में ये दिखाता है प्लेटफॉर्म की कितने अभी तक एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कोर्सेज देख रखे हैं पूरे माय एथीना प्लेटफॉर्म में, कितने एम्प्लॉयज कितने कोर्सेज वो एम्प्लॉय ने रिक्वेस्ट करके रखे अपने मैनेजर को, कितने कोर्सेज उस एम्प्लॉय ने अप्रूव और कंप्लीट किए हुए हैं. सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनालिटिक्स रिपोर्ट, हम उनको एक दूसरा रिपोर्ट भी दिखाते हैं जिसमें कितने यूनिक सर्च टर्म्स, मतलब कितने सारे कोर्सेज सर्च किए गए यूनिकली. सो टॉप 5 यूनिक सर्च टर्म्स हम उनको दिखाते हैं. तो दैट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड, दैट हेल्प्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन सी इंटरेस्ट सबसे ज्यादा ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाई करता है. तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड कि उनके इंटरेस्ट क्या है. नाउ आफ्टर द एनालिटिक्स बटन, मैं अभी एक सर्च बटन पे क्लिक करूंगा, एंड एज सुन एज आई क्लिक ऑन द सर्च बटन, एक सेंटर में एक स्क्रीन आती है जिसमें हमें सर्च करने का ऑप्शन दिया जाता है, जस्ट लाइक गूगल. एंड वो सर्च टैब के बिलो हमें रिकमेंडेशंस दिए जाते हैं माय एथीना के थ्रू, जो बेस्ड ऑन आवर प्रोफाइल, मतलब कि एक एम्प्लॉय का प्रोफाइल है. सपोजिटली लॉकिक का एक प्रोफाइल है जिसमें लॉकिक इज इंटरेस्टेड इन पाइथन और लॉकिक इज इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग. उसके बेसिस पे माय एथीना रेकमेंड करता है कोर्सेज. सो वो कोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल रहती है.
एंड अपार्ट फ्रॉम मायथीना के रिकमेंडेशन जो हम एआई थ्रू मॉडल थ्रू रन करके उनको कोर्सेज दिखाते हैं, उसके अलावा भी हम उनको ये भी दिखाते हैं दूसरे उसके बिलो हम उनको ये भी दिखाते हैं कि कौन से कोर्सेज मोस्ट पॉपुलर है ये ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि ये उनको ये हेल्प करेगा जानने में कि भाई मेरे पीयर्स और वो लोग कौन से कोर्सेज अभी कर रहे हैं, तो उससे उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि वो भी ये कोर्सेज कर पाए। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल सर्च फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड। यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पाइथन के लिए रैंडमली। सो अगर जैसे ही मैं पाइथन टाइप करके आई हिट एंटर, मुझे मेरे स्क्रीन में पाइथन के रिलेटेड सारे कोर्सेज दिखने लगते हैं। यहाँ पे टोटल मेरे को अभी स्क्रीन में 1288 कोर्सेज आए पूरे वेब से, और जितने भी कोर्सेज अवेलेबल थे फ्रॉम कोर्सेरा टू एड्यूरेका टू एजुकेटिव टू यूडेमी, डिफरेंट कोर्स प्रोवाइडर से सारे कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं। तो एक एम्प्लॉय को कहीं और जाने की जरूरत नहीं, वो यहीं से कोर्सेज सारे सर्च कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय इंटरेस्टेड है ये पाइथन कीवर्ड से नॉट सिर्फ कोर्सेज सर्च करने के लिए, अगर उनको आर्टिकल्स भी देखने हैं तो वो वही सर्च बटन में उनको कोर्सेज के बाद एक आर्टिकल्स बटन दिखेगा, वहां पे वो क्लिक कर सकते हैं। वहां पे उनको कोर्सेज के साथ अब आर्टिकल्स भी दिखेगा पाइथन के लिए, तो सारे आर्टिकल्स जो वेब में लिखे गए थे वो सब आर्टिकल्स भी अवेलेबल है, तो ताकि उनको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। अगर उनको ये भी देखना है कि ये कीवर्ड जो पाइथन उन्होंने लिखा है अभी सर्च में, वो गूगल क्या उनको उस गूगल उस पाइथन कीवर्ड का क्या रिजल्ट देगा, तो हम गूगल रिजल्ट भी सारे शो करते हैं यहाँ पे। तो आर्टिकल्स के बाजू में देयर इज वन मोर बटन व्हिच दे कैन क्लिक, एंड वेब पेजेस वो बटन का नाम है, वहां पे उनको सारे गूगल रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अगर वही सेम पाइथन कीवर्ड को अगर उनको वीडियोस देखने हो कोई पर्टिकुलर यूट्यूब में या कहीं और, तो वहां पे वेब पेजेस के बाजू में और एक बटन है वीडियोस, उस पर क्लिक करने पे उनको सारे वीडियोस दिखेंगे वो पाइथन कीवर्ड के सर्च रिजल्ट्स में। मतलब कि हम उनको कोर्सेज, आर्टिकल्स, गूगल रिजल्ट्स एंड वीडियोस दिखाते हैं। Now, I will go back to the courses button. So I'm again clicking on courses. एंड ये सेंटर स्क्रीन में हमें कोर्सेज, सारे कोर्सेज दिखते हैं, उसमें हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कोर्सेज की इन टर्म्स ऑफ उनके कोर्स प्रोवाइडर क्या है, सच एज कोर्सेरा है, उनका टाइटल क्या है, उनके डिस्क्रिप्शन क्या है, रिव्यूज क्या है। अगर ऑर्गेनाइजेशन खुद रिव्यूज लिख रहा है, कोई एम्प्लॉयज रिव्यूज लिख रहे हैं, तो वो भी ये लोग हमारी माइथना सिस्टम बताती है, ताकि एम्प्लॉयज एक दूसरे के रिव्यूज पढ़ के भी अगर उनको कोई कोर्स करना हो तो उनको हेल्प रहती है। सपोजिटली अगर वो कोई कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन है विच सेज रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। सारे कोर्सेज में एक बटन दिया गया है रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल। वो जैसे ही वो रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल बटन के लिए क्लिक करेगा एक एम्प्लॉय, उसको पूछा जाएगा कि ये कोर्सेज कितने अमाउंट का है एंड वो ये कोर्स करना चाहते हैं कि नहीं। अगर उनको ये कोर्स करना है तो उसमें ये अमाउंट एंटर करेंगे। सपोजिटली कोई भी एक 5000 या 3000 को कोई भी एक कोर्स हो, एंड वो रीजन की भाई दिस विल एनहांस माय माय स्किल्स और समथिंग, एंड एज सून एज दे कंफर्म, ये कोर्स मैनेजर को एज अ ईमेल शूट होगा कि ये एम्प्लॉय XYZ इज इंटरेस्टेड टू डू दिस कोर्स, काइंडली अप्रूव और मेक अ डिसीजन ऑन इट। एंड फॉर द एम्प्लॉय, फॉर दिस पर्टिकुलर यूजर, व्हाट विल हैपन इज नाउ एक सर्च के बिलो एक बटन है विच इज माई कोर्सेज, ये ट्रैक करेगा मैनेजर से लेके उस कोर्स की जर्नी को। तो क्या करेगा ये, जैसे ही मैनेजर को एक ईमेल शूट होगा तो ये अप्रूवल पेंडिंग विच इज देयर इज अ बटन विच सेज कोर्सेज बीइंग एक्सप्लोर्ड बाय मी, उसमें अप्रूवल पेंडिंग में कोर्स चला जाएगा कि इट सेज कि ये मैनेजर से अभी अप्रूव होना बाकी है। एंड जैसे ही उसको मैनेजर अप्रूव कर देगा तो एम्प्लॉय को एक ईमेल आएगा जिसमें लिखा होगा कि योर कोर्स हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर, काइंडली गो टू कोर्सेरा एंड बाय दिस कोर्स फ्रॉम दिस लिंक। हम उनको लिंक भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको कहीं पे स्पेसिफिकली कोर्सेरा में लिंक फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड वहां पे जाके वो कोर्स को बाय कर सकते हैं। एंड मायथीना क्या करेगा, इस जैसे ही मैनेजर अप्रूव करता है, अप्रूवल पेंडिंग से उनको ले जाएगा इन प्रोग्रेस सेक्शन में, एंड एज सुन एज इन प्रोग्रेस सेक्शन में एम्प्लॉय कोर्स कंप्लीट करता है, तब एम्प्लॉय सारे डॉक्यूमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट, जैसे उनको कोर्स अभी उन्होंने कोर्सेरा में गए, उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया तो उनको कोर्सेरा से मिलेगा सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट कोर्सेरा में जो उन्होंने पे किया था उसकी रिसीट, एंड जो भी उनको रेटिंग्स और रिव्यूज देना है वो कोर्स के लिए, वो सारा डेटा वो मायथीना में अपलोड कर सकते हैं। एंड एज सुन एज वो कोर्स मायथीना में अपलोड करेंगे इन टर्म्स ऑफ उनका सर्टिफिकेट, उनका रिसीट, ये कोर्स चला जाएगा कंप्लीटेड सेक्शन में। तो इससे मायथीना में उनकी एक जर्नी कंप्लीट हुई ये कोर्सेज की। एज सुन एज वो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं अपना कोर्स, उनको ये जो सारी इंफॉर्मेशन थी वो चले जाते हैं उनके मैनेजर के पास,
एंड उसके बाद वो चली जाती है एचआर के पास, ताकि अगर जो रीइंबर्समेंट प्रोसेस है ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड वो भी होता है मायथीना के थ्रू. सो दे डोंट हैव टू गो एनीवेयर. मायथीना एचआर एंड फाइनेंस सर्विसेज में उनको रीइंबर्समेंट प्रोसेस में भी हेल्प करेगा, ताकि उनका रीइंबर्समेंट भी स्मूथली कंप्लीट हो जाए. नाउ ये था हमारा माई कोर्सेज में. माई कोर्सेज में देयर इज वन मोर थिंग. नॉट सिर्फ हम अप्रूवल पेंडिंग, इन प्रोग्रेस और कंप्लीट ट्रैक करते हैं, बट ऑल्सो कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजर्स, बिकॉज दे नो कि दिस कोर्स विल हेल्प, सो वो भी कभी कभी कई कोर्सेज मैंडेटरी असाइन करते हैं अपने एम्प्लॉयज के लिए कि दिस कोर्स विल हेल्प यू, दिस कोर्स विल हेल्प यू. तो हमारे पास माई कोर्सेज के अंदर ही वन टैब है जिसमें मैंडेटरी कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स दिया जाता है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई कोर्सेज उनको असाइन किया जाए तो वो सारे कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स उनको यहाँ पे अवेलेबल होंगे, मैंडेटरी कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स. ओवरऑल माई कोर्सेज पूरा फ्लो इंक्लूडिंग मैंडेटरी, इन प्रोग्रेस, कंप्लीटेड उनका ट्रैक करेगा. Along with my courses, now there is one more button on the left hand side, which is my learning path, and I will click on that button. Basically what that button will do is my learning path my Athena के AI recommendation के through उनकी प्रोफाइल के बेसिस पे उनके लिए लर्निंग पाथ्स बनाएगा. एंड वो लर्निंग पाथ उनके बटन के अंदर देयर इज अ टैब व्हिच सेज कोर्सेज रेकमेंडेड फॉर मी. वहां पे वो क्लिक करेंगे मायथीना रिकमेंडेशंस पे, एंड उनको सारे उनके पाथ मिलेंगे, क्योंकि समटाइम्स इट्स वेरी यूजफुल फॉर एन एम्प्लॉय टू जस्ट हैव द रिकमेंडेशंस बाय मायथीना, सो दैट इट हेल्प्स देम टू नॉट सर्च रादर देन जस्ट गो थ्रू इट. सो ये लर्निंग पाथ में वो देख सकते हैं कि उनके पास ओके जावा पाथ बनाया गया है, जो भी उनकी प्रोफाइल होगी उस बेसिस पे उनके लिए सारे बिगिनर, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट हम कोलेट करके सारे कोर्सेज उनके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग उनको एक पाथ बना के देते हैं, सेट ऑफ 3, 4, 5 कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट एंड लर्निंग गोल्स. एंड उस हिसाब से फिर वो कोर्सेज वन बाय वन दे कैन स्टार्ट एंड दे कैन कंप्लीट इट. एंड at last there is one more button on the left hand side which is internal content, and as soon as they internal content पे वो click करते हैं, यहाँ पे as I was talking about the some of the courses, if an organization अगर उनको खुद internally build करना है, उनको खुद को होस्ट करना है कि उनके एम्प्लॉयज को हेल्प करेगा, और कई कोर्सेज ऐसे होते हैं, कई ट्रेनिंग्स ऐसे होती है जो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होती है, रादर देन कोर्सेरा और यूडेमी में जाए वो खुद ही कोर्स होस्ट करे. तो वी प्रोवाइड देम द एंटायर प्लेटफॉर्म जो उनको अवेलेबल होगा अंडर द बटन विच सेज सीई कंटेंट विच इज इंटरनल कंटेंट. उसके अंदर पे इंटरनल कोर्सेज करके उनको एक बटन अवेलेबल होगा, वहां पे वो सारे इंटरनल कोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दे कैन फाइंड इट हियर. एंड उनको अगर कोई कोर्स उनको पसंद आता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया गया था बाय देयर मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और एचआरस और द लर्निंग टीम्स, वो कोर्सेज को वो क्लिक करके एक प्लेटफॉर्म पे चले जाएंगे रेंडरिंग पे, जस्ट लाइक कोर्सेरा में प्लेटफॉर्म्स होते हैं वैसे मायथीना के रेंडरिंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे वो इंटरनल कोर्सेज भी कंप्लीट कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज कि अगर उनके लिए कोई स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज के लिए अगर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हो इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट्स और इन टर्म्स ऑफ कोई भी स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स फॉर एम्प्लॉयज हो, माय अथीना के अंदर दे कैन अपलोड एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर द ट्रेनिंग्स. तो वो सारी ट्रेनिंग्स उनको मैंडेटरी कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स में असाइन हो जाती है, दे कैन स्टार्ट द जर्नी विच इज नॉट स्टार्टेड, इन प्रोग्रेस एंड कंप्लीटेड. अलॉन्ग विद दैट अगर एम्प्लॉयज के लिए कोई भी पॉलिसीज हो, लीव पॉलिसीज या कोई भी पॉलिसीज, लर्निंग पॉलिसीज, तो वो सारी पॉलिसीज भी मायथीना के अंदर वो एम्प्लॉयज के लिए रख सकते हैं, ताकि एम्प्लॉयज उसको एक्सेस करके ये देख सकते हैं कि उनका बजट क्या है या फिर व्हाटसोएवर पॉलिसीज दे हैव. सो ओवरऑल this Maithina helps to not just go for external internal courses, also to generate learning paths, also to generate the skills, also to drive the completion, and if there is anything else we can do a lot more also. Thank you. That's really awesome. Mousumi, are we done with the presentations? Yes, Deepika here. I think we're done with the presentations. If there's any questions, we could take them. Sure. मेरी फिर से viewers को request है कि वो अपने questions comment section में post कर सकते हैं, which we will ask to Continual Engine. Meanwhile, I'll request BGFI team, if you have any questions, we can get it answered while
people will post their comments. Hi, this is Tony from BGFI. Could you help me to understand the process of uploading images for the alt text purpose? Because usually we encounter these images in ebooks, right? So whether it be EPUB or PDF or whatever, right? So how can blind person upload the image for the alt text? Alt text itself is excellent, but how can I upload the image? That's one question. The second one is, does the tool also read equations? Because as of now, I mean, I use MathJax or at times use something to convert to MathML and read the equation. So does the tool read equations as well? Thank you. Yeah, so I will address the second question first. Yes, the tool does understand math equations very well, and it can give you both MathML output and it can give you an alt text output, which is consistent with the WCAG guidelines. So that is in regards to the equations. Now, in regards to your question is how do you get your hands on to the image itself, right? Yeah, exactly. Is that the question? Exactly, yes. Because Yeah. it's in an ebook, right? So how do I get that? Yeah, so that is, that is a limitation that the tool has. So in Table Vision API, in Table Vision, what we have done is we have given a cropper where the user can use the cropper to basically highlight the image and crop it. But for a visually impaired person to know exactly where the image is and to crop it out would be challenging. So these APIs are best suited when you have images. So one thing could be, and that is if the person is a technologist as well, is if they can extract images from EPUBs or e-text, which is a utility that we ourselves have developed in-house. And if required, maybe we can give access to that as well. So, you can just upload your HTML file and all the images get extracted and then the alt text gets generated. So that is one way of using the tool. But in many cases, like if there is an equation or if it's a complex image which has both image and text in PDFs, there it would be difficult to um, locate the image and extract it accurately. So that is definitely a Yes, limit. exactly. That's the user case I'm pointing at from Yeah. documents. Yeah, so if you look at it in prep also, you can see that we have this ability to detect images, but it's not that accurate. So somebody has to visually look at it and see if the bounding box is proper or not. Because again, if it doesn't get cropped properly, then the description that will come out won't be good. So here maybe some kind of a collaboration with somebody who can get the images out and then you can use the tool. So I understand. Yeah. Okay. So from the viewers, there's one question. Can we remediate password protective PDF documents? Siddhartha. Hello? Yeah. So it's same thing as normal PDF. If you have the password, then you can remediate these kind of documents. So you can input it and you should be able to remediate. And is the process accessible? Like many a times, the process of entering the password and stuff is not really accessible with the PDF. So yeah, so it's like while uploading the PDF, you would give an option to enter a password inside prep, and through that you should be able to remediate a password.
I have a follow-up question. Like many of the documents may be confidential also because that's why they are password protected. So how will you ensure the security of the system? Because when we upload and then download it, so Yeah, so I all think the I think I would echo what just Turab has said, because uh, he's a lawyer and I'm a banker. In our industry, confidentiality is a very big. I mean, it's a sacrosanct requirement. So we are generally not allowed to upload many documents on the servers and stuff. So that is something which may come problematic here. And Siddharth, sorry to keep you on hold, but on the password question, I have a follow-up question. So PDFs lot of times come with two set of passwords. One is the password for viewing the PDF, which the users are generally given, and there are a lot of PDF files which come with an owner protected password. So you can, as a user, you can view those PDFs just fine, but when it comes to converting them, you need the owner's password. And most of the times, because they are uploaded on web and there are no passwords provided, you won't have those. Yeah, Siddharth, if you can take the password question, and I'll take the security question after that. Sure. Thank you. So yeah, so like you correctly mentioned, that two level of password protection for PDFs. So the first level of password protection, that's for viewing, and the second is for editing. So if there is a password protection on editing, then we can't actually edit that PDF. So we'll not be able to tag it even using Adobe, for example. So that is something that is a flaw in the PDF itself. But the case where it's just a read protected thing, and if you're able to read the PDF properly, then we will be able to remediate using that. So yeah, that's how. And in regards to security, I mean, anybody who uses PrEP we have a user agreement. They'll usually sign a user agreement, and if the user is particular about the confidentiality of the documents, then we will auto delete after the remediation from the server. Also, there is an option in PrEP itself to delete the document from PrEP. So the user himself or herself can delete it, or if it is something that is really needs to be enforced, then we can auto delete it right after the user gives confirmation that it's okay to delete. Thanks, Moshmi. That helps. Siddharth, just one suggestion. So the owner password, how I currently work around this issue is, so generally those PDFs where the user is allowed to view the PDF without a password, the user can, I print them in a fresh PDF file, and then I can generally make the changes. So maybe you can probably incorporate such kind of a facility at the back end where you can create, say, a dummy PDF out of the original one which has an owner password, and then you can enable tagging in the dummy PDF which you have just created. Sure, I think that should be possible. But yeah, if you have some samples or something, you can share that with us, and we will be happy to check those and get back to you on that. Thank you. Sure. And so I just have one small doubt, Moshmi or Siddharth, that like in the long run, obviously now you have said that there will be the facility uploading, downloading, or giving it to you for servicing. But will there be a plan to like have a software afterwards? Because maybe that would be much faster for us. Like maybe in a year's time, where we can have a software on a system. Because here the net connectivity also is very important in this uploading, downloading, all those things. So Yeah, something which can enable users to use the services on offline basis. yeah, means we have Yeah, it that's on a our. good point. Yeah, and we can definitely do that. The thing is, we decided to have a cloud-enabled service because the entire world is going on cloud. So that's why we thought of. But as you rightly mentioned, this need is something that we are seeing across the board. So definitely we have put it on our roadmap, and we should have a desktop version or
Another thing is, so with most of the organizations like banks and law firms, audit firms also, so they have this, they are quite edgy about sending anything on the servers. So while the word is going on cloud, but they want things to not go out of their shared drives or their own servers. So although we may have very good internet connectivity in future, but if we want to say tap those enterprise customers which are very edgy about or very particular about confidentiality, I guess the desktop versions play a pivotal role there. Yeah, that's a very good point, and it's noted. Thank you. All right. I'm going to share uh, the subscription links for Continual Engine's digest mode news on the comment section in just a bit. For the users, it's also there in the video description. अगर आपको monthly subscriptions चाहिए है on the updates of the Continual Engine solutions, you can you can subscribe over that link and get the digest mode news. So on that, over to you, Turab. Okay. So it's my pleasure to express the vote of thanks for this session. It was a very enriching session, and it's a relief for us that something like PDF or tables and graphs also can be remediated and we can access them effectively. So I thank the team from Continual Engine for sparing their valuable time with us and patiently demonstrating their various products and also answering our questions. I also thank the various viewers who have spared their time to attend this session, and thank you very much from our end, on behalf of BGFI. Mousumi, before vote of thanks, we've just had one last question come in. If you don't mind taking it for us. Anything in the pipeline for generating descriptions for artwork, like paintings or pictures? This is the question coming from Kunal Mehta. Yeah, so Kunal, that is one area, where actually there's a lot of work happening from Microsoft and Google and those. Have you tried their services? So that is why we have been specifically focusing on technical images, because not work has been done in that area. But eventually, yes, we would like to cover all images in the spectrum. So that would be the ultimate goal. And yeah, if you stay on with us, maybe we'll have that also functional in a bit. Does that answer the question, Deepika, or is there any follow-up? No, I think that answers the question. Thanks, Mousumi. And I can see that if anyone would like to subscribe to our regular updates, they've added the link to the form in the descriptions in the chat. Please do sign up if you're interested. Thank you. Thank you so much to all the viewers and to Continual Engine for designing such awesome solutions for us. Thanks again. Thank you, BGFI. Thank you, Turab. Thank you, Sadaf. It's been a privilege and a pleasure to be able to showcase our products and solutions. And thank you for all your patience and and the time that you have given to go through this presentation. Thanks a lot. Thanks, guys. And I think it's a breakthrough product. So, probably 20, 25 years ago, maybe slightly more than that, no one could imagine that today we'll be using screen readers and they would be very, very powerful. So I would say AI is at such kind of a stage as of now, where probably 5 years down the line, people will be wondering as to, okay, this wasn't possible 5 years ago. So all such sessions actually open our eyes or open ourselves to see new possibilities of what all AI and computers can achieve. So thanks a lot for such informative session and patiently answering all the doubts.
Thanks, Ajay. Thank you.